My name is Anant Rajput and you are currently watching Anant Rajput Course. आज का हमारा मेन टॉपिक है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। आप सभी को पता होगा सिंगली लिंक्ड लिस्ट हमारी सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना मैं आपको सीधा सिखाता हूँ हम एक लिंक्ड लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड में एक फाइल खोल दूँगा। हियर इट इज़ और हमारा टर्मिनल ये रहा। इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक बेसिक टेम्पलेट होती है एक सी प्रोग्राम की, वो है stdio.h हमारी हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे printf फंक्शंस इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन होता है और stdlib.h में malloc calloc जैसे फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले हमें एक नोड बनानी पड़ेगी जो कि हम एक स्ट्रक्ट कीवर्ड्स की मदद से बना सकते हैं। इसके अंदर हमारे दो मेंबर होंगे, एक होगा इंट डेटा और एक होगा हमारा स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक नाम से। ये एक पॉइंटर है जो दूसरे स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा। ये जो हमारा स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्चर है ये एक तरह का सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दूसरे स्ट्रक्चर को पॉइंट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर एक हेड पॉइंटर बनाएंगे और इसे नल से इनिशियलाइज कर देंगे। हमें यहाँ पे एक सेमीकोलन भी लगाना होगा। Now we are good to go. Now I am going to create a function to make nodes and it is going to return us a pointer to structure and its name is going to be create node and its inputs are going to be a struct node pointer and an integer. It is just in prototype. I am not writing its implementation over here. I am going to write it below our main code. So let me just write it again. आप इसमें से किसी का भी नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। जनरली बाय कन्वेंशन हम हेड और इंट डेटा का यूज़ करते हैं। आप अपनी मदद से जो भी आपको सही लगे आप वो रख सकते हैं। इंट डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एलोकेट मेमोरी ऑन हीप। तो उसके लिए हमें एक और पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो कि होगा टेम्प नाम से और malloc फंक्शन की मदद से हम अपनी मेमोरी को एलोकेट करेंगे। नाउ हम इसमें सबसे पहले अब टेम्प के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू रखेंगे। तो जो हमारे टेम्प के अंदर डेटा होगा वो जो हमें एक्सटर्नल इनपुट मिला है डेटा उसके इक्वल होगा और जो टेम्प के अंदर लिंक होगा वो हम अभी नल रखेंगे। नाउ इफ आवर इनिशियल हेड is equals to 0, I mean null, so it means it is the starting point of our linked list, so we are going to return temp as it is. But if our head is not null, so it means it already have some nodes, it can be 1 2 10 20, so we are going to iterate it up to that point where the that node has a link having value null. So first of all I have to make a pointer for this structure node which is going to which I am going to initialize with the value head. So to iterate I am going to use a function while loop and our condition will be while ptr link is not equals to null, we are going to iterate ptr. Done. As after whole iteration process we are going to get a pointer which points to a node whose link is null. So in linked list we try to add it at a position where the previous member has null.
तो अब हम अपना जो टेम्प हमने नोड बनाई है वो इस पॉइंटर के पीछे लगा देंगे। सो जो हमारा अभी ptr का जो लिंक है वो हो जाएगा हमारा टेम्प के इक्वल, और हम रिटर्न कर देंगे हेड, क्योंकि हेड चेंज नहीं होता है लिंक लिस्ट के अंदर। आई थिंक वी आर गुड टू गो। हम वैसे अगर इसके अंदर चाहे तो मेमोरी एलोकेशन चेक का भी फंक्शन लगा सकते हैं इफ़, और वी कैन जस्ट लीव इट। तो अब हमें लेट्स से प्रिंट एफ का यूज़ करके मैं पहले प्रिंट कराऊंगा हाउ मैनी नोड्स यू want टू क्रिएट, और इंट n नाम से मेरा वेरिएबल होगा। उसके बाद मैं स्कैन ऐप की मदद से इसे स्कैन कर लूँगा n के अंदर। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, I am going to use this function, and it is going to be first it is going to be asking us to enter the data, and then I'm going to call the function create node and giving it inputs as head and our data, but I haven't made the data variable. Let me make it as soon as possible, and then it is going to scanf percentage d at the rate data. We left an semicolon over here, so let me just put it. Now I think we are good to go. Let me run this. SLL, it is asking for how many nodes I want to create. Let's say 5, and I'm going to put data over here 5. नाउ एज यू कैन सी इसने एक लिंक लिस्ट बना दी है जिसके अंदर 5 नोड्स हैं, और इसने 1 2 3 4 5 डेटा को उसके अंदर स्टोर कर रखा है। तो अब हमें इस डेटा को अगर प्रिंट कराना है तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे प्रिंट डेटा का। जो सबसे पहले हमें इसका प्रोटोटाइप लिखना होगा, तो और इसे हमें इनपुट देना होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार। इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ रखेंगे, void print data struct node star head. So first of all we are going to create a pointer to structure, struct node star ptr equals to head, and now I am going to iterate it over. So we are going to use a while loop, while ptr not equals to null, then it will stop if we get ptr equals to null. It means it is the end of linked list, and if it is not null then it is going to print our data that is stored inside the linked list. So for a particular ptr the data stored will be equals to ptr arrow data, and we are going to move the pointer forward after printing data. Now I think we are good to go. If you want to write would like to write, you can write return, it doesn't make any sense. And now after all this we are going to call this data. The data
is, and now we are going to call it print data, and its input will be head. So let's compile it again. Let's say we are going to create 6 nodes this time, and the data will be, let's say I take it at random. Yeah, so data is 12 3 43 45 6 3, and we can put, let's say after printing all of them, it is going to print null, so it denotes it is the ending of our linked list. So let's again compile it, and again some random data set. Yeah, as you can see, it shows null, which doesn't mean anything. It only have 6 linked nodes, 12 34 5 4 3 4, and after we are just printing null to show it is the end of linked list. So this is all from my side. Hope you liked the video, so please subscribe and support me.